Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we will start with the second part of negotiable instruments MCQ discussion. ठीक अच्छे 40 नंबर जे ऑलरेडी डिस्कस करथिलो 41 हमें देखिबा. If a negotiable instrument is materially altered without consent, it becomes dash. Materially altered रो meaning कोन ना important elements are changed and without any mutual consent. Important elements change भी हेई पारिबो, but जदि consent रे change होची then it is valid. Without consent होची तो सेटा कोन right. Check drawn without sufficient funds results in offence under dishonor रे section 138 कोन dishonor of checks. Without funds जदि किछि चेक टा ड्रॉ होची insufficient funds रे सेटा कोन जदि चेक बाउंस होची सेटा केस हबो ना हबोनी. So it is an offence or not? Under which section? Section number 138. The drawee in a check is usually home. Dishonor of the check रो केस टा माने बहुत थरे से पचारची. ओके बहुत थरे से पचारची. तो सॉरी बैंक. A promissory note without signature is काहेंगे से सिग्नेचर थिबो unconditional undertaking to pay थिबो कि unconditional promise to pay थिबो. Foreign bills require dash माने एजा होची किछि गोटे लीगल टर्म्स स्टैम्प टाइप रो डिक्लेरेशन टाइप. तो मन रखिबो foreign bills require noting and protest. Which one is not a feature of negotiable instrument? Payment in goods. आज्ञा टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स माने गुटे पर्सन अंडरटेकिंग देथिबो कि मो पेमेंट करबी कि कोन आले सी गुटे इनसॉल्वेंट हेतिबो तो दैट इज अ डिफेक्टिव टाइटल. सी आगुडू जानछि कि से लोक सेडा करि परियोनी कहि कि बट फिर भी कोन पे एंटर करला बुझिला ना नहीं. देन अ बियरर चेक कैन बी पेड टू बियरर. मैच्योरिटी ऑफ चेक इज चेक रे केबे ग्रेस डेस रहउची चेक रे केबे भी रहियोनी डिमांड रहिबो से 3 मंथ्स जोडा थिला सेडा ओवरऑल को आउच सेडा ग्रेस पीरियड नै बेले गुटे चेकटा पे 3 मास जदी ग्रेस पीरियड दबो हबो कि नै से कहउची एवरेज गुटे चेक रो जदी किछि भी मेंशन हेनी पोस्ट डेटेड नै तो तार ड्यूरेशन होची 3 मास तापर से चेकटा पूर्ण हे होची ऑटोमेटिक. Which negotiable instrument is always drawn on a bank? Always drawn on a bank check. Which of the following can never be crossed? Promissory note or bill of exchange. The negotiable instrument act is applicable to whole of India. है जम्मू कश्मीर एजा किछि included नहीं. whole of India माने whole of India. कौन है लाउन होचे ताको? When the check is payable across the counter of a bank, it is called open check. A check is always payable on demand. Promissory note must be in writing, unconditional or signed by the maker. तापर crossing of a check affects the negotiability of the check or mode of payment on the check. Negotiable negotiability कहले काउ ट्रांसफर करि परियोनी आको धरि कि जाई कहियो कि तमे आन दियो ड्रॉ करि कि सेटा सब हे पारियो कि हे परियोनी क्रॉसिंग ऊपर डिपेंड करछि बुझला नै. जनरल क्रॉसिंग वाली कहले से लोक रिलेटेड के कर लेले जाई गिरी देखे लेले से पैसा दबो. स्पेशल क्रॉसिंग माने कोन हबो ना लेखा हेतिबो से पर्टिकुलर पर्सन्स को आगे दबो. आ कोन रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग रे कोन होछि किछि किछि पर्सन को रेस्ट्रिक्टेड थाउची अपार्ट फ्रॉम देम कागो एले भी से दबो डिपेंडिंग ऑन द रूल्स. तो आ गोटे कोन मोड ऑफ पेमेंट से क्रॉस द काउंटर दबो ना ता अकाउंट को पठेबो से जिंस रे मध्ये क्रॉसिंग टा इन्वॉल्व हेगी थाउची. क्रॉसिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट. Movable. Conditional movability. A bill of exchange does not require hela
बिल ऑफ एक्सचेंज रे तमे देखिछ कि एक्सेप्टेंस टा हेल्ला आगा से बिल ऑफ एक्सचेंज टा हबा कई नाही बुझिला ना नहीं पर्टिकुलर पीरियड रे तमे जाई कि सेडा डिस्काउंट करि परिबो पर्सन्स चेंज हेबे डैश पार्टीज आर इन्वॉल्वड इन अ प्रॉमिसरी नोट हैला an instrument incomplete in one way or other is called incomplete instrument को हमें कौन कहूँ inchoate instrument then when an instrument is अच्छा ambiguous instrument माने कौन किछि किछि elements missing थिबो मन अछि ना नहीं confusing थिबो किंबा changing थिबो foreign instrument माने what is a foreign instrument हाँ बस बस किए गुटे पार्टी तो सेडे थिबो dishonored माने ऑब्वियसली सेटा बाउंस हेला डिसऑनर्ड चेक जोड़ा हमें कहूँ कि से पर्टिकुलर पार्टी से ड्यू डेट वालों को पेमेंट करि पारलानी when an instrument is drawn conditionally for a special purpose as a collateral security and not for the purpose of transferring the property thereon it is called escrow instrument escrow instrument रे कौन होतला drawn conditionally for a special purpose as a collateral security माने कौन से साइन करिकी गोटे ब्लैंक चेक टी रखिदेला कि जदि कौन प्रॉब्लम हम देन तू एटा यूज कर बुझला ना नहीं नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी माने दबर अच्छी कहि से देनी गोटे कोलैटरल वाले माने गोटे प्लेज करिया पे गोटे सिक्योरिटी हिसाब रे से देछ हैला then a bearer instrument is negotiated by delivery only नेगोशिएटेड वाली कहले कौन अरे बियरर जे भी अच्छी ता पाखरे थिले तो से आउ का दबो डेलीवरी हो कौन बुझी पालिनी कौन दीटा जा थिला कि चेक करला बियरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय खाली डेलीवरी सेडा खाली डेलीवरी हाँ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट रे वी हैव डेलीवरी एंड एंडोर्समेंट बुझला एग्जांपल से देख देखो ए has a bearer check of rupees 10,000 he gives it to B by delivery the check is negotiated and B becomes the holder बुझला ना नहीं डेलीवरी रे आगा से नेगोशिएबिलिटी टा अच्छी then liability of a drawer to compensate the holder in case of a dishonor is primarily provided under section okay then a promissory note is not a document of title of goods सेटा document of title of goods केबे भी हे परनी that is just a mere unconditional promise to pay someone which of the following is not essential for a check not essential for a check बीड आगा नाले सेटा हाईलाइट कहीं करी checks may be payable to the drawer himself not essential for a check बुझिला ना नहीं who among the following can't cross a check हला foreigner can't cross a check केबे आसिला एडा 1st March 1882 1st March 1882 बिल्स ऑफ एक्सचेंज रे बिल्स केते प्रकार रही था 3 then if a minor draws endorses delivers or negotiates an instrument such instrument binds गोटे माइनर अच्छी से ड्रॉ कर देला इंडोर्स कर देला डेलीवर कर देला नेगोशिएट कर देला सब कर देला तो ए जिंसटा का ऊपर माने बाइंडिंग माने बाध्य का ऊपर लागू का ऊपर होछ छाड़ी के आ जेती की पार्टी अच्छ हैला which of these is not a negotiable instrument as per the negotiable instrument act every instrument payable otherwise than on demand is entitled to dash days of grace period 3 days of
grace period. The term a check in electronic form is defined in the Negotiable Instrument Act under electronic check. मन अच्छी ना यार मीनिंग होची इलेक्ट्रॉनिक चेक एटा को सेक्शन रे आसुची इलेक्ट्रॉनिक चेकटा 1A of section number 6. When an instrument is drawn conditionally or for a special purpose as collateral security and not for the purpose of transferring property, it is called कहithili already. A check is always payable on जो डेट मेंशन हेतिबा पेएबल तो से दिन रो हेयोच बुझिला ना नहीं. Under section 118 of the Negotiable Instrument Act, it is presumed until the contrary is proved that every transfer of a negotiable instrument was made before. सिंपल जिनस एते कथा नहीं से कहूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जोड़ा अच्छी जदि पेएबल 3rd मार्च को अच्छी रे माने 3rd मार्च को पैसा डिजर्व करछन से लोक जाग तो 3rd मार्च पूर्वर से इंस्ट्रूमेंट ता पाखरे रहियो ना 3rd मार्च पर रहिबो पूर्वर रहियो सेटा प्रेजम्पशन ना नहीं तो सेटा कहूँ सी बिफोर मैच्योरिटी रहियो कहि गोटे माने प्रेजम्पशन तो अच्छी ना बुझिला ना नहीं ना बुझा पड़लन क्लियर कौन कहले 72 डा check is always payable on the date mentioned therein कौन पे किए कहला रे चेक रे ग्रेस पीरियड ना है ना बुझिला ना नहीं ग्रेस पीरियड ना डेट मेंशन therein आगा तार येडा चेक दिया ही होची बट डेट टा भाबी चिंती की पकोचन जानछो तो dash days grace period is allowed for payment of check. Negotiable instrument can be transferred ad infinitum. What is this? कौन एडा ad infinitum नहीं मु वाला जानिया कथा ad infinitum कौन what is ad infinitum लेखि दोची मु टिके वाओ वाओ ठीक 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 टू द इंफिनिटी और फॉरएवर विदाउट एंड बढ़िया तमे पिला एमिति ना टू इंफिनिटी और forever without end forever without end. A bearer instrument is negotiated by हाँ एटा डिलीवरी आगा हम बस बोल रहे एंडोर्समेंट दे दीच हला ना नहीं सेटा हम कंफर्म कर देली ना डिलीवरी आगा आंसर टा से गोटे जगह डिलीवरी दोची गोटे जगह एंडोर्समेंट दोची बट आंसर इज डिलीवरी ओनली मो एग्जांपल मध्य कहली इंक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट माने बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स unconditional order. The presumption as true date of negotiable instrument is that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on से कोची जदि गोटे बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉमिसरी नोट रे लिखा है 5th April 2025 तो आमे कौन भाबिबा से 4th April रे ए डेट टा पके देथि वाले भाबिया ना 6th April रे बने कि ए डेट टा पके देथि वाले भाबिया ना 5th April दिन सेटा बने चले भाबिया जो डेट मेंशन हेछि से डेट रे सेटा बने चले भाबिया ना नहीं तो से सेटा कुछ हैला on such date. When a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to continue the person the holder thereof, the instrument is said to be negotiated. तो जहाँ भी अच्छे ट्रांसफर है टू कंटिन्यू द पर्सन टू द होल्डर देयरऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड माने ये जो होल्डर थिला से होल्डिंग पीरियड टा कंटिन्यू करिया पई से आउ जण को से होल्डर पोजीशन जदी देय होची तो ताको हमें कहिया कोन इट इज टू बी नेगोशिएटेड कहि के ओके किछि डाउट्स अछि तमे देखुचो क्वेश्चंस केति की रिपीट होची तो क्रॉसिंग गुडा को जहाँ भी अच्छे टिके डिटेल रे पाठ पढ़िबो एंड प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज जारे पार्टीज किए कोन कागो ऑब्लिगेशन अछि सेडा देखिबो एंड एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट गुटे एलिमेंट ता जोडा अछि सेडा टिके ता ऊपर ध्यान दो ओके ठीक अछि दिस इज द एंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच।